Okay, so starting with the paragraph 4, I was about 6 years old. Once I saw a beautiful picture in a book. So इसमें वो कह रहा है कि मैं एक बार 6 साल का था और मैंने एक बहुत सुंदर सी पिक्चर देखी बुक में. It was a picture of a dense forest. वो एक फॉरेस्ट की पिक्चर थी, एक सुनसान सा फॉरेस्ट. I thought about the forest and drew a picture of an animal. तो उस लड़की ने या लड़के ने, जो नरेटर है बेसिकली, उसने फॉरेस्ट के बारे में सोचा और एक पिक्चर ड्रॉ कर दी जो कि वो एक एनिमल की थी. आई शोड इट टू सम ग्रोन अप्स एंड आस्क्ड देम, आर यू अफ्रेड ऑफ इट? तो वो कहता है, नरेटर कहता है कि मैंने वो कुछ बड़े बच्चों को दिखाए. ग्रोन अप्स आर द bigger ones, the person or the adult. Okay, so I showed it to some grown ups and asked them, are you afraid of it? और फिर कहता है कि मैंने उनको दिखाया और मैंने पूछा, क्या तुम्हें इससे डर लगता है? तो but they asked me, afraid? Why should one be afraid of a hat? तो उन्होंने बोला कि afraid, मैं इनसे एक किसी hat से कोई क्यों डरता है, कोई टोपी से कोई क्यों डरेगा? My drawing was not of a hat to me. It was an elephant, but the grown-ups even advised me, stop drawing, devote yourself instead to geography, arithmetic or grammar. तो जो grown-ups थे, उन्होंने उसे कहा कि तुम अपना ध्यान इन सब से हटाकर ज्योग्राफी, अरिथमेटिक और ग्रामर में लगाओ. लेकिन उस लड़की ने उसके अकॉर्डिंगली एक टोपी की पिक्चर नहीं बनाई थी, उसने एक एलिफेंट की पिक्चर बनाई थी जो कि बड़े बच्चों को एक टोपी की तरह लगी. देन दैट इज व्हाई आई गेव अप ड्राइंग, दैट इज व्हाई आई कुड नॉट बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट. तो वो कहता है नरेटर कि यही रीजन था कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सका. मैंने अपनी ड्राइंग छोड़ दी क्योंकि वो अपनी छोटी एज में ही डीमोटिवेट हो गया. Okay, the boy drew a picture of a forest, an animal, a girl, a hat. So definitely it's written in the paragraph that the boy drew the picture of a forest. Okay, then so the option will be A. Next question is, afraid is a question, a statement, a request, an order. So आप देख सकते हो कि like we have to just skip to the paragraph for seeing it कि afraid word कहाँ use हुआ था with a question mark. So you can just see that the afraid word is used here. I showed it to some grown-ups and asked them, are you afraid of it? But they asked me, afraid? So see, the word is used here as a question. उन्होंने उसे पूछा, डर? मैं एक टोपी से क्यों, कोई एक टोपी से क्यों डरेगा? That is why, so afraid is used as a question here. So the answer is A. Further, but for the advice of grown-ups, the child would have become a geographer, a mathematician, an artist, a grammarian. Okay, so अब advice, according to the advice of the grown-ups, जो बड़े बच्चे थे, उनके advice के accordingly बच्चा क्या बन सकता था? बच्चा बन जाता एक आर्टिस्ट. अगर वो एडवाइस ना सुनती ग्रोनअप्स, वो बच्चा ग्रोनअप्स की एडवाइस ना सुनता तो वो बच्चा एक आर्टिस्ट बन जाता. लेकिन वो डीमोटिवेट हो गया एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ, तो इसीलिए वो एक आर्टिस्ट नहीं बन पाया. Why did the child give up drawing? बच्चे ने ड्राइंग क्यों छोड़ दी? He was so advised. He wanted to become a mathematician. He had no time for it. It was difficult to draw. So definitely उस बच्चे ने, इससे पता लगता है कि उस बच्चे ने एक फॉरेस्ट की पिक्चर बनानी थी, लेकिन उसने एक एलिफेंट की पिक्चर अपने दिमाग में रख के बनाई और जो बड़े बच्चों को एक हैट की तरह लगी. It means it was really difficult to draw for that child. That is why the child gave up drawing. So the right option here is, it was very difficult to draw. The opposite word for beautiful is tidy, lovely, pretty, ugly. Definitely ugly. Ugly का मतलब होता है बदसूरत और beautiful का मतलब होता है सुंदर. So beautiful का opposite tidy तो नहीं हो सकता. Tidy का मतलब होता है साफ, जो साफ सुथरा है. Lovely प्यारा, pretty सुंदर. So ugly is बदसूरत. So उसका हम opposite word चाहते हैं beautiful का, सुंदर का, तो that is बदसूरत, that is ugly. Option D. So just going to the next
paragraph. It was a full moon night. Bright moonlight flooded the road. I was walking slowly. Suddenly, I heard a whistling sound first. So it was given a pura, like proper landscape kind of thing, proper information about how was the atmosphere, how was the surroundings. So he just told the narrator just told that it was a full moon night और बहुत ब्राइट मून लाइट नजर आ रही थी. डेफिनेटली अगर फुल मून है तो लाइट भी उतनी ही ब्राइट आती है. सो ही वाज सेइंग दैट द रोड वाज कवर्ड विद दैट लाइट ओनली. हम कहते हैं चांद की रोशनी से पूरी सड़क लाइक भरी थी. काइंड ऑफ पूरी सड़क नजर आती है रात को चांद की रोशनी से. आई वॉज वॉकिंग स्लोली. सडनली आई हर्ड अ विस्लिंग साउंड फर्स्ट. तो वो कह रहा है कि मैं धीरे चल रहा था और अचानक ही मुझे एक विस्लिंग साउंड मतलब सीटी की आवाज सुनी. I thought it was another late evening stroller like me. So उसको लगा कि उसी की तरह कोई और पर्सन भी यहाँ पे घूम रहा है, उस रोड पे घूम रहा है. The sound was loud and cheerful. Suddenly a boy on a bicycle sped past me. So इसका मतलब है जो वो बोल रहा है कि साउंड बहुत ऊंची थी, अच्छी थी और एक उसी टाइम एक लड़का बाइसिकल पे साइकिल पे उसके पास से निकला. I could not see his face. वो अब उसका चेहरा नहीं देख सका. After a few minutes he was back again. उसने उसका चेहरा नहीं देखा लेकिन थोड़े मिनट बाद वो वापस आ गया. वो लड़का जो साइकिल पे था वो वापस आ गया. This time he stopped a few feet away from me. और इस बार वो उससे कुछ फीट की दूरी पे खड़ा हुआ and gave me a smile. और उसको एक बड़ी सी स्माइल दी. He looked like a slim boy of 14. वो एक पतला सा लड़का 14 साल का एक पतला सा लड़का था. He wore a school blazer, a cap and a scarf. उसने एक ब्लेजर एक कोट डाला हुआ था और एक कैप डाली थी और साथ में एक स्कार्फ लिया हुआ था. His eyes were bright and cool like moonlight. उसकी आंखें बहुत चमकदार और ठंडी थी जिस तरह एक मूनलाइट होती है. मूनलाइट बहुत चमकदार और डेफिनेटली रात को हम एक ठंडा कहते हैं तो इसलिए रात को वो जो मूनलाइट है वो एक ठंडी लाइट देती है. You don't have a bell on your bicycle, I said. उसने उसको पूछा कि तुम्हारे बाइसाइकिल पे कोई बेल नहीं है, घंटी नहीं है. He said nothing. उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया. I put out my hand, but he did not take it. उसने अपना हाथ बाहर निकाला. जो लड़का था जो बात कर रहा था उसने अपना हाथ बाहर निकाला लेकिन उसने नहीं. Like handshake करते हैं, it's in that way only. And even the boy on the bicycle did not responded him. Then quite suddenly he stopped again. उसके बाद वो quite suddenly he just stopped and the next day I learned that whistling boy was a ghost. So अगले दिन उसे पता लगा कि वो जो whistling boy था जो उसको सीटी की आवाज आई थी वो जो whistling boy था वो एक भूत था. Okay, so it was quite an interesting story. Just skip to the paragraph questions now. Who appeared quite rapidly? अब इसमें क्वेश्चन है कि जो कौन था जो इतना अचानक एकदम से आ गया. सो यू कैन जस्ट सी दैट इन द वेरी फर्स्ट लाइन इट्स रिटन दैट I heard a whistling sound. I was walking slowly. Suddenly I heard a whistling sound. So अचानक से वो बाइसाइकिल वाला लड़का जो whistling sound प्रोड्यूस कर रहा था, so he appeared, the whistling boy. Okay. Why could the narrator not see the face of the boy? जो नरेटर था वो लड़के का चेहरा क्यों नहीं देख सका. He was afraid of the boy. क्या वो उससे डरता था. The boy sped past quickly. जो बॉय था वो बहुत जल्दी से उसके पास से निकल गया. The boy did not like him. जो लड़का था वो उसे पसंद नहीं करता था. He was an ugly looking boy. जो वो लड़का बाइसाइकिल पे था वो एक बदसूरत लड़का था. So definitely it's B option. The boy sped past quickly. You can see in the paragraph it's written that I could not see his face. See. Like you can just read the first line before that. If you can get the answer from the line after that, like I could not see his face, after a few minutes he was back again. So we can find the answer in this line. So when this happens, you can read the next line or the line before that. So we'll read the line before that. The sound was loud and cheerful. Suddenly a boy on a bicycle sped past me. It means suddenly एकदम से वो लड़का उसके पास से निकला इसलिए ही उसका चेहरा नहीं देख सका वो. So why could the narrator not see the face of the boy? So it's B option. The boy sped past quickly. What did the boy not wear? A scarf, a cap, an overcoat, a blazer. Definitely it's C option, an overcoat. You can see in the paragraph it's written, he wore a school blazer, a cap and scarf.
So here nowhere is written an overcoat. So that is why we have chose option C. Why did the boy not take the hands of the stroller? जो वो लड़का था उसने बॉय जो बाइसिकल पे लड़का था उसने स्ट्रॉलर के साथ लाइक रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? He was busy. He did not look. He did not like him. He was a ghost. He was in hurry. जो लड़का था वो बिजी था. फर्स्ट ऑप्शन. द सेकेंड ऑप्शन वो उसको पसंद नहीं करता था. थर्ड ऑप्शन वो एक भूत था. फोर्थ ऑप्शन ही वॉज इन हरी, वो जल्दी में था. Obviously it's a third option. He was a ghost. It's C option. अब आप देख सकते हैं पैराग्राफ में at the last they have told that the next day I learned the whistling boy was a ghost. So definitely वो एक भूत था इसीलिए उसने उसको respond नहीं किया. Then the last question, what was the most unusual about the boy? सबसे unusual मतलब होती है कोई अजीब चीज. लड़के के बारे में सबसे अजीब चीज क्या थी? He was cycling fast. His eyes were bright but cool like moonlight. He wore a school uniform. He was whistling. वो सीटी बजा रहा था. डी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं. He wore a school uniform. तो उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी. इसमें कुछ अजीब चीज नहीं थी. His eyes were bright but cool like moonlight. उसकी आंखें चमकदार थी. वो भी एक अनयूजुअल चीज नहीं थी. कईयों की आंखें बहुत चमकदार होती हैं. He was cycling fast. वो बहुत तेज साइकिल चला रहा था. लाइक बहुत it's mentioned in the paragraph like suddenly it was happened suddenly and he was actually shocked about that. So it means he was cycling really fast and that was a really unusual जिसको हम कहते हैं अजीब thing थी उस बच्चे के बारे में. That is why he was like it was at the end we come to know that the boy was a ghost. So it was an unusual thing that the boy had. Further we'll skip to the paragraph 6. Okay, so it's related to Kalpana Chawla. Kind of biography about Kalpana Chawla. When Kalpana Chawla was a student at Tagore Bal Niketan in Karnal, she used to fill her drawing books with sketches of aeroplanes. जब कल्पना चावला एक स्टूडेंट थी, एक बच्चा था, जब कल्पना चावला एक लड़की वो बच्चा थी जब वो टैगोर बाल निकेतन में पढ़ती थी इन करनाल. ओके एंड उस टाइम पे वो क्या करते थे, वो छोटे होते से ड्राइंग बुक्स पे स्केचेस बनाते थे एरोप्लेन्स के. ओके आफ्टर हाई स्कूल हर पेरेंट्स वर कीन दैट शी शुड स्टडी मेडिसिन्स बट शी प्रेफर्ड इंजीनियरिंग. सो जब वो +2 के वो चाहते थे कि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो मेडिसिन की स्टडी करें लाइक मेडिकल लें, बट उन्होंने इंजीनियरिंग ले ली लाइक नॉन मेडिकल ले ली. ओके She chose aeronautics to study more about aeroplanes. उन्होंने aeronautics का सब्जेक्ट चूज किया ताकि वो एरोप्लेन्स के बारे में और जान सके. She was then only 17-18 years later. उस टाइम पे वो सिर्फ 17-18 सालों की ही थी. She has become the first Indian woman and the first from any Asian country to travel in space. वो first Indian woman बनी जो किसी भी एशियन कंट्री से स्पेशली जिन्होंने ट्रैवल किया सबसे पहले स्पेस में. दिस हैपेंड ऑन नवंबर 19, 1997. और उन्होंने कब ट्रैवल किया, लाइक ये जो इंसिडेंट आगे मैं बताने लगी हूँ वो कब हुआ था, नवंबर 19, 1997 व्हेन शी वाज वन ऑफ द 6-member क्रू टू गेट इनटू द स्पेस शटल. उनके स्पेस शटल में 6 मेंबर्स थे और उन 6 में से एक थी कल्पना चावला. मेंबर क्रू to get into the space shuttle Columbia. So at that time she was at Columbia. It was a 15-day adventure in space. So it was a 15-day adventure. So उन्होंने 15 days के लिए वहाँ पर रहना था basically space में to get the research and everything done. This is a proud moment for India, she said just before her launch into the space. जब वो space में just जाने ही वाली थी, so just before the launching, she just said that this is a proud moment for India that she is the first woman, and from any Asian country, she is the first woman from India who is going to the space. Kalpana was a black belt in karate. कल्पना black belt थी कराटे में. An expert swimmer, बहुत expert swimmer. भरतनाट्यम आर्टिस्ट, भरतनाट्यम भी उन्हें आता था. एंड अ पोएट हु वंस रोट अबाउट द जिप्सीज ऑफ करनाल. ओके एक पोएट भी थी, उनके अंदर एक पोएट भी था, एक भरतनाट्यम आर्टिस्ट भी था, एक स्विमर भी था और वो ब्लैक बेल्ट थी कराटे में, उन्हें कराटे भी आता था. ओके
So that's all about the paragraph. I'll just skip to the questions now. Which of the following statements about Kalpana Chawla is wrong? इनमें से कौन सी statements कल्पना चावला के बारे में गलत है? Okay. She spent her childhood in Karnal. She wanted to study medicine. She is the first Indian woman space traveler. She is an expert swimmer. इस अकॉर्डिंगली हम जिस पैराग्राफ में चेक करेंगे, सो यू कैन जस्ट सी दैट शी स्पेंड हर चाइल्डहुड इन करनाल. दैट इज टोटली ट्रू. हमने पढ़ा है कि दैट व्हेन कल्पना चावला वाज अ स्टूडेंट एट टैगोर बाल निकेतन इन करनाल. ओके, एंड देन फर्दर शी वांटेड टू स्टडी मेडिसिन. वो मेडिसिन like she didn't wanted to do medicine thing, she wanted to do engineering. So उन्होंने बोला है कि इसमें से कौन सी बात कल्पना चावला के बारे में गलत है. सो यू हैव टू सी टू इट. एंड फर्दर सी ऑप्शन इज शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पेस ट्रैवलर. वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो एक स्पेस ट्रैवलर रह चुकी हैं. एंड द डी ऑप्शन इज शी इज एन एक्सपर्ट स्विमर. सो ये गलत बात है कि इसमें से देखना है कि हमने कौन सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है. शी वांटेड टू स्टडी मेडिसिन. She never wanted to study medicine. Okay, we have just read in the paragraph right away that her parents wanted that she should study medicines, but she preferred engineering. She didn't want to study medicines. Okay. So further, Kalpana Chawla traveled in space in a vehicle named NASA, Columbia, Gypsy, none of these. यहाँ पर हमने पढ़ा है कि स्पेस शटल में 6 लोग थे उस टाइम पे, एंड when she was one of the 6-member crew to get in the space shuttle Columbia. Space shuttle का नाम था Columbia. So we will just mark this as Columbia as the right option. So the next is the number of people who accompanied Kalpana on her space traveling were 3, 7, 5, 6. Definitely 6. यहाँ पर already mentioned है कि 6 people when she was one of the 6-member crew to get into the space shuttle. Okay, this is a proud moment for India. This here refers to the day. इसमें this is a proud moment for India. यहाँ पर उन्होंने बोला था कि this is a proud moment for India. She just said before her launch into the space. So उन्होंने बोला है कि this is a proud moment for India. So ये कब की बात है? This here refers to the day. Kalpana got admission in an engineering school? No. Kalpana was selected for space travel? No. Kalpana was 17 years old? No. Kalpana traveled in space. That is the right option. Kalpana traveled in space. The word that means study of flying aircraft is engineering, aeronautics, medicine, space. ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट? जो स्टडी है एयरक्राफ्ट की स्टडी, जिसमें हम एरोनॉटिक्स पढ़ते हैं, जिसको हम एरोनॉटिक्स कहते हैं. सो वी हैव जस्ट रेड इन द पैराग्राफ अबाउट this only that she chose aeronautics as her subject. She chose aeronautics to study more about aeroplanes. So that is why the right option is aeronautics. That is the B option. So that is all about this paragraph. We'll just skip to the paragraph number 7. Long ago, there lived a pair of crows in a big tree in a forest. बहुत समय पहले crows का एक झुंड एक लाइक बड़े से ट्री में, एक फॉरेस्ट लाइक बड़ा सा ट्री जो एक फॉरेस्ट में था उसमें रहते थे. अदर एनिमल्स ऑफन रेस्टेड अंडर दैट ट्री. जो बाकी एनिमल्स भी थे वो भी उस ट्री के नीचे आके छांव में रेस्ट करते थे. अ ब्लैक स्नेक लिव्ड इन अ होल बाय ट्रीज रूट्स. ट्री के रूट लाइक इन द लाइक ग्राउंड, उस ग्राउंड में एक होल था जिसमें एक ब्लैक स्नेक रहता था, काला सांप रहता था. द क्रोज हैड मेड अ नेस्ट एंड द शी क्रो लेड एग्स ऑन इट. ओके, सो जो क्रोज थे उन्होंने एक नेस्ट बनाया. नेस्ट मीन्स जहाँ पे वो बेसिकली अपने एग्स ले करते हैं. सो जो शी क्रो थी, मतलब फीमेल क्रो थी, उसने वहां पर अपने अंडे दिए. सून द एग्स हैच्ड एंड 4 बेबी क्रोज केम आउट. उसी टाइम लाइक थोड़े टाइम बाद ही एग्स हैच्ड का मतलब होता है एग्स लाइक प्रॉपरली उसमें बेबी रेडी हो गया. एंड 4 बेबी क्रोज केम आउट, और उसमें से 4 बच्चे निकले, मीन्स 4 अंडे थे उसमें. वन डे when the crow were away to bring food for the baby crows. जब एक दिन क्या हुआ, जब क्रोज गए हुए थे
फूड लाने के लिए, खाना लाने के लिए अपने बच्चों के लिए, द स्नेक वेंट अप टू द नेस्ट. जो स्नेक था वो रेंगता हुआ नेस्ट के पास चला गया ऊपर, एंड एट द लिटिल क्रोज. और उसी टाइम वो छोटे छोटे बच्चों को खा गया. When the crows came back with food, जब क्रो वापस आए खाना लेकर अपने बच्चों के लिए, they saw the snake coming out of the hole and found the nest empty. उन्होंने देखा कि जो स्नेक था वो अपने होल से बाहर आ रहा था और उन्होंने देखा कि नेस्ट खाली था, उसमें बच्चे नहीं थे. This made them very sad. तो वो बहुत उदास हो गए क्योंकि उनके बच्चे मर गए. After some months, the same thing happened again. और कुछ महीने बाद यही चीज दोबारा हुई. Therefore, they thought if they lived there, the snake would eat up their children every time. So they decided to leave that place. तो फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ पर रुके तो क्या होगा कि स्नेक दोबारा उनके बच्चे खा जाएगा. इसीलिए उन्होंने वो डिसाइड कर लिया कि वो उस जगह को छोड़ देंगे. So just skipping to the questions now. The crow had made the nest to live in it comfortably, to lay their eggs in it, to save their eggs from enemies, for the baby crows to live in it. So you can just see in the paragraph already, they have like made the nest to lay their eggs in it. You can just see in the paragraph, one day when a black snake lived in the hole. After that, you can just see the line, by tree's root, the crows had made a nest and the she crow laid eggs on it. So you can just see that उन्होंने nest basically क्यों बनाया? वो चाहते थे कि उसमें वो she crow अपने अंडे दे. So the right option here is to lay their eggs in it. So skipping the second question, in the absence of the crows, the snake went the nest to look after the baby crows, eat up the baby crows, feed the baby crows, play with the baby crows. So जब crows वहाँ पे नहीं थे, जो snake था वो nest के पास गया क्या करने के लिए? Definitely उनको खाने के लिए. उनको first option look after the baby crows, वो baby crows को देख रेख नहीं करने गया था. Second option eat up the baby crows, definitely वो उन्हें खाने गया था. Feed the baby crows, वो उन्हें खाना खिलाने तो नहीं गया था, वो उल्टा उनको खाने गया था. Play with the baby crows, baby crows के साथ खेलने तो नहीं गया था. So option is right, that he just went to eat the baby crows. So B option is right option. The crows were sad because they could do nothing against the snake. They had nobody to help them. They had to leave their home. They had lost their babies. जो crows थे वो बहुत उदास हुए. क्यों? Definitely first option is that they could do nothing against the snake. वो snake के कारण वो कुछ नहीं कर सकते थे कि snake उनके babies खा गया. वो कुछ नहीं कर सकते थे कि वहाँ पे snake है. They had nobody to help them. उनके पास कोई नहीं था जो उनकी मदद करे. They had to leave their home. उनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा था. They had lost their baby. So this is the right option, that उनके बच्चे मर गए, उनके बच्चे गुम गए. Basically उनके बच्चे snake खा गया तो वो अपने बच्चों से अब नहीं मिल सकते. So that is why they were sad. The crows decided to go elsewhere because crows ने क्यों decide किया कि वो कहीं और चले जाए? The tree was too big for them. Other animals often took rest under the tree. They were not safe there. The snake would eat up their babies every time. So you can just see in the paragraph that it happened when after some months the same thing happened again. Therefore they thought if they lived there the snake would eat up their children every time, so they decided to leave that place. So यहाँ पे लिखा है fourth question में, the crows decided to go elsewhere इसीलिए क्योंकि the snake would eat up their babies every time. So it's a D option. Which quality of the crows is shown by the story? Cowardliness, fear of the future, unfriendliness for the snake, love of change the places. Okay, so इसमें क्वालिटी कौन सी नजर आई है क्रोज की? उनका डराकलपन, उनका डर फ्यूचर के लिए, और अनफ्रेंडलीनेस फॉर द स्नेक, मतलब जो स्नेक के साथ उनकी बिल्कुल भी दोस्ती ना होना. लव ऑफ चेंज द प्लेसेस को चेंज करने का प्यार, कि मतलब उनको प्लेसेस चेंज करना अच्छा लगता था. So definitely it's fear of the future, क्योंकि उनको था कि अगर वो वहाँ पर रुके, therefore they thought if they lived there, the snake would eat up the children every time. So they will not be able to lay the eggs
any time after that. So they were like fearing about the future. उनको डर था future के बारे में कि आगे जाकर भी यही चीज़ दोबारा होती रहेगी. That is why they were this quality showed in the paragraph in the story that they were fearing about the future.